हाय, वेलकम टू सृजन इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गवर्नमेंट ने आज अभी अनाउंस किया है देयर विल बी अ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इंडिया शुड नॉट हैव अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। टूटी हुई अप्रोच नहीं होनी चाहिए अलग अलग। एंटायर मिलिट्री पावर विल हैव टू वर्क इन यूनिसन। एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Second reason, changing nature of war and security environment. See, war theaters have changed over the time. Modern warfare is entirely different what it used to be some decades back. National security challenges requires swift response, immediate swift response आने की ज़रूरत है. So, and the breaking silos is also one of the reason. Integration, collaboration, convergence and rationalization. Because of these three causes, the government has announced there will be a chief of defense staff. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पर जब 1999 में हमने कारगिल में विक्ट्री लिया था, इट केम एट अ कॉस्ट. कारगिल कमेटी आई. कारगिल कमेटी ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट किए. इट आस्क्ड फॉर मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच. मोर इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड and it proposed a new डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बनाया है, DMA. ये जो DMA होगा ये डील करेगा लार्जर इश्यूज़ को पर्टेनिंग टू डिफेंस. अब स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इसके अंडर में काम करेगा. इसका हेड होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इसके अंडर में वर्क करेंगे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. सो दिस इज DMA. DMA में सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल का एक फाइन बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाएगा. देयर विल बी civilian officials as well as military officials. Jointness in procurement, training and staffing would be ensured. Establish joint theater commands. This would be done on priority. Now, CDS will also have a secondary role. The secondary role would be of परमानेंट चेयर ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. ये जो COSC है ये एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है. इधर सीनियर मोस्ट चीफ यूज टू हेड इट. This would be getting the support of integrated defense staff. Now, let us come to the role and responsibilities of CDS. First, it will act as the principal military advisor to Raksha Mantri on tri-services matter. Exclusive matters जो होंगे, बट एक्सक्लूसिव मैटर्स जो होंगे वो रेस्पेक्टिव चीफ डायरेक्टली रक्षा मंत्री को ब्रीफ करेंगे. सेकेंड, not exercise military command. This is important. CDS would not exercise military command, including over the three chiefs. Third, CDS will administer tri-service organization. अच्छा, जो साइबर और स्पेस है ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूसिव रहेंगी CDS के पास. See, the theater, war theater commands are changing, the war fronts are changing. Fourth, integrated inputs of the tri-service to relevant authority. This would be provided by CDS. Jointness in operations, logistics, transport training, support services, communication, repair and maintenance would be done by CDS. The next is optimal utilization of infrastructure and rationalizes. Seventh, enhance the area of indigenous equipments. हमारी आर्मी अभी भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करती है. वी नीड टू बी इंडिजिनस विद रेस्पेक्ट टू आवर इक्विपमेंट्स. Evaluate plans for out of area contingencies, for example humanitarian assistance and disaster relief. Ninth, implement 5-year defense capital acquisition plan, annual acquisition plan, integrated capacity development plan. These all would be done by CDS. 10th, assign inter-services prioritization to capital acquisition. 11th, integrate and rationalize the international cooperation and planning. 12th, prepare strategy paper, make strategy paper. Strategy making is a very important and crucial task. So prepare strategy papers on military matters, reform, augmenting combat capabilities and obsolete practices. It is important to add a new thing. It is also important to delete the older things. So, end obsolete practices. 14th, build trust and confidence in the rank of file. 15th, brief
Prepare for Raksha Mantri on empirical and objective reports on annual achievement in jointness during the year. So the question arises, who will be the first CDS? The person would be 4-star general, not eligible to any government office after demitting the office of CDS, plus no private employment after that without prior approval for 5 years. So this is a quick brief. The details are not, fine details are not out yet. This is a quick brief on Chief of Defence Staff. Thank you so much for watching this video. Take care.